Hello everyone, my name is Atulya Harshvardhan. Welcome to another episode of Behind the Creators presented by Creative Mindset. हमारे आज की पॉडकास्ट की गेस्ट एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं. हर नेम इज श्रुति जैन. शी इज़ अ मंडल और मंडाला आर्टिस्ट, वट एवर यू प्रेफर टू कॉल इट. हमने आज की कन्वर्सेशन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, लाइक हर आर्ट जर्नी, उन्होंने कैसे सीखना स्टार्ट किया, उनके फ्यूचर गोल्स और tips and tricks for a mandala artist and how you people can learn and grow as an artist. So बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं. पर इफ यू आर लिसनिंग दिस ऑन एन ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, डू फॉलो अस देयर एज वेल. और अगर इसे वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं मतलब, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. और कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छा लगा इस पॉडकास्ट का, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. सो लेट्स बिगिन. Welcome Shruti to our podcast, and thank you for accepting our invitation to our podcast. Thank you for inviting me, having me here. So before we get further in the conversation, can you tell brief about you, what you do, and what you are, where you are from? Shruti Jain. I reside in Bangalore, India. Uh, I am actually a student and I love drawing murals. So I'm a mural artist as well. I'm studying BA psychology. I'm in second year. Okay. So how did your journey in art started? From where the interest in art started for you? My journey in art started at last year, last June. That is June 2020. Because of lockdown, I had like so much free time to do, and then I started experimenting, like what suits the best for me. I honestly मुझे पता भी नहीं था मंडला क्या है. I started exploring Instagram में देखा, Facebook, Instagram. Then I got to know, okay, you have something called as mandala also in art. तो ऐसे करते करते I started trying different forms of mandalas, just acrylic, watercolors, and then I realized, okay, this is what I'm interested in. Let's work on it. And then mandalas maybe I used to draw in A5, like छोटा सा A5 Hmm. से now I can draw murals. Like कितना confidence build up हो गया है in 1 year, in just the span of 1 year. From A5 to A4, A3, murals, canvas. It's been an amazing journey. And your growth has been very fast because from people to shift Because from I was a very consistent. yes, that is the only point, because from people to shift from Mm. A5 to a wall art or mural, it's take very long time if they are not consistent. Mm. And the consistency is the only difficulty many artists face nowadays. Yes, so true. I was very consistent about it. Like I knew this is what I really want to do. That was my passion. That was my calling. So I never stopped. Consistency is the key. That's all I can tell. If you're really passionate and consistent about it, you can achieve a lot. सो ऐसा कौन सा टाइम था, जैसे आपको अंदर से लगता है कि यही मेरी कॉलिंग है? कि क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं करना, इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, Mm-hmm. डिफरेंट मीडियम्स ट्राई करते हैं, तो एक एक कंफ्यूजन रहता है कि यही रास्ता सही है कि नहीं है. तो वो कब कॉलिंग आई, कब जब आपको आपके प्रेज करने लगे आपके फ्रेंड्स, फैमिली, या फिर इंस्टाग्राम पे, कब वो कॉलिंग, कब आपको पता लगे दिस इज माय कॉलिंग? Praising को अलग रख दो. Like praising doesn't come here. If you do something and you feel really happy, contentful, then okay, हाँ, this is the thing I really want to pursue. Praising तो सब करते हैं. वो तो बाहरी दिखावा है. अगर you feel really happy doing something, आपको पता नहीं चलता टाइम कैसे जाता है. When you do that particular thing, that's when you realize this is the thing for me. I love this. I really want to do something more in this. I have to achieve a lot in this. It comes when you start exploring. Like there are so many things in world to do. When you start exploring, that's when you realize this is my cup of tea. So keep exploring unless you find your hands in it.
So as you said that praising is not not was your focus. So Yeah, praising was never my focus. I have seen your art, and it has vibrant color, and every design has a different look, and it's unique in itself. So how do you come up with the idea that of every different artwork? There's like so much brainstorming required to do one artwork. It takes me like 3-4 days to do. Let it be A5 also. मैं A5 में भी करती हूँ तो मुझे 3-4 दिन चाहिए वो idea to transform that idea from brain to the paper. Idea मिलना बहुत मुश्किल है. uh, to get ideas into paper is so difficult. When I get the ideas ऐसे ही हो जाता है. In 2 hours I just finish an artwork. लेकिन वो idea मिलना ही बहुत difficult है. अगर idea हाथ में हो वो paper में convert करना is really easy. So can you a little bit describe what is your brainstorming method, or how do you do it with before you start a artwork? I keep exploring. Like अभी मुझे let it be on Instagram also. मैं explore page में जाती हूँ कभी-कभी. अगर कोई मुझे scenery अच्छा मिल गया या suppose a couple post I liked it. So I think how can I convert that couple post? How can I gel up that post into my mandalas? How can I combine these two and make a beautiful artwork? So वो सोचने के लिए I want like 2-3 days. A5 के लिए भी I want 2-3 days. तो murals के लिए तो और भी time लगता है. So when I was researching before this podcast, so मेरा Hmm. इंटरेस्ट ये था कि अचानक से फ्रॉम 1 ईयर प्रीवियस 1 ईयर मंडल आर्ट बहुत ज्यादा बूम किया है, बहुत ज्यादा Hmm. स्प्रेड हुआ है, बहुत सारे आर्टिस्ट ट्राई Especially कर रहे हैं. lockdown में. True. हाँ, तो मेरा वही क्यूरियस था कि क्यों हुआ. तो उसके ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को पता चला कि ये हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट कल्चर में Hmm. बहुत पहले से है, बहुत पहले से हो रहा है. Hmm. और जब लॉकडाउन में सब लोग को टाइम मिला तो ये एक थेरेपी की तरह भी काम करता है, और बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को मिला के बनता है, तो रिलैक्सिंग फील होता है लोगों करने के लिए. तो पिछले 1 साल में मेरे को ये लगता था हमेशा कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक से बाकी आर्ट फॉर्म के मुकाबले में ये इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ. तो उसका मैंने यही मेरे को लगा, पता चला कि क्योंकि बाकी आर्ट वर्क क्या होता है कि एक आर्ट सिर्फ एक आर्टिस्ट जो है Hmm. वो जो फुल टाइम प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए बेनिफिट है. लेकिन ये मंडल It आर्ट is जो होता है कि therapy. हाँ, इट्स लाइक अ थेरेपी, and anybody can do it even once a month to Also. Hmm. relax and release the dopamine in the brain. People started realizing mandala as a therapy only in lockdown. Like इतना time मिला लोगों के पास इतना time था. They Hmm. had like 1 year, 1.5 year. That's when they realized they were very stressed. Offices were closed, schools were closed. They wanted something to cool their mind. So they started shifting their office work to doing something like what they love, like baking, cooking, Yes. art, music, dance. So the, these are basically therapy, I can tell. Mandala is also used as in art therapy. Like I'm studying psychology, I'm psychology student. तो ऐसे माइंड को कूल करने के लिए ऐसे कलरिंग बुक्स देते हैं. Hmm. Where they have the mandala, we have to color it. That's when you release dopamine. That's when you realize you jitne bhi if you're facing something, you it gives you cool. You start releasing, and then you realize um, it gives you a sense of calmness. I can tell. Yes. सो आपने जब ये अपनी आर्ट की जर्नी स्टार्ट की थी, तो Hmm. क्या आपने स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि आपको लगा था कि अब मुझे इसी फील्ड में जाना है, कि ये मिडवे में आपको लगा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, अब मुझे इसमें ही कुछ करना है? कैसे हुआ ये? मेरा तो आई डिडंट हैव एनी लाइक मुझे इसमें ही जाना है करके मेरा वो पर्सपेक्टिव नहीं था. मैंने ऐसे ही हम्म. रैंडमली स्टार्ट किया था. हाँ, ये जैसे बाकी लोगों ने किया, ये फील्ड बहुत बूम हो रहा है. People started trying out this field. वैसे भी मैं even I started trying out this mandala art, and then when I started doing it, तब then I got interest.
और अभी भी I'm not sure that if I really want to pursue what I'm studying or I have to pursue my passion. I'm like kind of in midway. I'm trying to figure out things what to go in. So like once I complete my third year, I can have a better focus, a better clarity. Yeah. But और what I can tell is I do mandala to cool myself, or if if I have a bad day, I just take out my sketchbook, color pencils ले लेती हूँ, and then I start drawing it. हाँ, मेरा तो यही सोचना है. आई डोंट नो दैट इन फ्यूचर व्हाट यू विल टेक एज आर्ट, यू विल टेक आर्ट एज अ करियर और any other profession, but what my thinking is that art is that even if you are doing a job, you can take, if you are really passionate, after the Exactly. job you can take Even time out yeah, for your passion. It's not like you yeah, have to true. do, if you're doing full time, that's even better, Yeah, but you that's can also do different it with your thing. job. Yeah, वो So stress release करने के लिए you can do it anytime. आपने अपना वर्क पुट आउट करना कब स्टार्ट किया, मतलब कब से स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पे मतलब और शेयर करना और ये सब? I started drawing mandala June, exact June 2nd, 2020. I started drawing और June 26 को I opened the page. मेरा पेज बहुत बेसिक था, छोटे छोटे मंडलास थे. if you I still have the post. मैंने ऐसे डिलीट और आर्काइव नहीं किया, अभी भी है. तो if I see that progress और अभी where I am, it's like wow. it's I used to draw छोटे छोटे A5 में, let it be only 3-4 patterns, और वो भी इतना टाइम लगता था मुझे, लाइक 4 आवर्स लगते थे एक एक छोटे को कंप्लीट करने के लिए, 4 आवर्स लगते थे. एंड देन जुलाई फर्स्ट वीक आई स्टार्टेड पोस्टिंग. मुझे कुछ नहीं पता था इंस्टाग्राम के बारे में, हाउ इट वर्क्स, algorithm क्या है. आई हैड नो clue about it. When I started experimenting, posting, seeing other pages, exploring, तब मुझे पता चला, okay, this is how it works. This is how Instagram works. So when you got a real boom on Instagram, how was your reaction of your family when they discovered that you are doing so much of art, and what was the reaction of your friends? I got boom in the second lockdown. I had like 2K followers, कुछ 2K के आसपास. देन मेरा एक रील 1M हिट हुआ, म्यूरल का रील 1M हिट हुआ. दैट्स व्हेन लाइक ऐसे बहुत प्रोग्रेसिवली से माय फॉलोअर्स स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम 2K to 8K आई एम राइट नाउ. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द रील my followers started increasing. People started knowing about this field, that I am into this after जब मेरा followers increase हुआ, then people actually started appreciating a lot. When you increase, I mean, when you grow like so much in that field, that's when people start recognizing you. तो तभी मुझे और ज़्यादा recognition मिली. I started growing it. When I do an artwork, कितना भी छोटा हो, A5 भी हो, बहुत brainstorming, emotions, I put so much in one artwork. There's so much, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, छोटे छोटे से छोटे के लिए भी बहुत. there's so much required to create one beautiful piece. So that's my Instagram bio. So आप इंस्टाग्राम में पोस्ट और रील्स के अलावा भी कुछ उसके फीचर्स जैसे लाइव आते हो या फिर उस फीचर्स यूज करते हो, तो कैसे कुछ आपने, मैंने देखा कि आप रेगुलरली पोस्ट और रील्स तो अपलोड करते हो, तो क्या वो ऑन द स्पॉट होता है या फिर आपने कुछ कंटेंट बैंक बना के रखा है कि पहले से शूट और एडिट करके रखा हुआ है और वो आप स्केड्यूल के हिसाब से अपलोड करते हो, क्या स्ट्रैटेजी क्या है? Honestly, मेरा फीड कोई भी जाके देखेगा तो बोलेगा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत नीट है, बहुत क्लीन है, पहले से प्लानिंग करके रखती है. मैं वैसी नहीं हूँ, मैं ऑन द स्पॉट पोस्ट करती हूँ, लाइक जो मिले पोस्ट कर देती हूँ. आई डोंट हैव अ प्लानिंग अबाउट माय इंस्टाग्राम पोस्ट, neither of my artworks. Okay, abhi I feel like posting, I feel positive right now, I feel I want to post this reel, so I just post it on the spot. I don't have a particular time or date to post anything. It depends on my mood. If I'm like really happy or if I'm feeling positive, I just post. इससे मुझे याद आता है कि एक एक बहुत
अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, गैरी वी, इफ यू हैव लिसन्ड। तो वो कहते हैं Okay. कि यू डोंट हैव टू ट्रीट योर इंस्टाग्राम Always believe, yeah. as a gallery or what. Just put out your Hmm. work and be consistent. Whatever you People will feel see like. your work. So it's more about putting Hmm. out what your content out. Because मैं कभी भी plan करती हूँ तो it doesn't turn out the way I want. और ऐसे दिखता भी नहीं. ये होता है ना कि हम लोग जो जो इस कंटेंट पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं और बहुत ज्यादा उससे हमें रहता है कि इसको तो बहुत रीच मिलेगा, उसको नहीं मिलता है। लेकिन उसका नहीं मिलता. बट वी पुट रैंडम आर्ट वर्क और रैंडम हाँ, उसका आ क्लिप, जाता है. उसका मेरे उससे भी साथ ज्यादा भी आ हुआ जाता है. है। ये सबके साथ होता हाँ, रहता है, उसका मुझे आ लगता है जाता है. सभी लोग इससे सबके साथ होता है. वो कर सकते हैं। हाँ, रील्स एक्चुअली अभी इंस्टाग्राम पूरा बहुत ज्यादा रील्स को पुश कर रहा है, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आ हम्म. गए हैं। एवरीबडी इज हाँ, प्रमोटिंग YouTube पे शॉर्ट भी. कंटेंट। हम्म. तो Reels are very catchy. यस, Like ऐसे loop में भी 3-4 बार you can see. Post post is just like seeing. Reels are audio visual. You can hear the song and then you can see. I think that's why reels are booming a lot these days. एंड आई ऑल्सो थिंक दैट स्लोली इंस्टाग्राम विल इज Hmm. डिक्रीजिंग द स्टैटिक पोस्ट रीच. It will और now, रील्स को प्रमोट कर रहे हैं. it is now shifting. Now every social media platform will shift to video format, more video format, या and वीडियो. less about text and pictures. मेरे ऐसे आई हैव मोर रीच इन रील्स कंपेयर टू पोस्ट. मेरे जितने भी रीच है सब रील्स की वजह से है. इफ आई पोस्ट वन रील ऐसे आ जाता है 10K 20K रील्स. वो भी मैं पोस्ट करती हूँ तो हार्डली एक वीक के बाद आते हैं मेरे 10K 20K रील्स. आई मीन रीच. बहुत प्रमोट कर रहा है इंस्टाग्राम रील्स को. Yes. So let's talk about some commission work. Do you take commission work or accept selling your framed work or your artwork? What you do, like commission work? Uh, I'm not still open for commission works. Yeah, I'm still not open for commission works. I just sell my artworks So and frames. you draw wall arts in your own home only. Yeah, अभी तक तो we have drawn like 3-4 wall arts. Yeah, 4 wall arts. ऐसे I drew in my room and then hall. I haven't really gone for a mural order. I'm planning to So go, but then अभी so तक I what? haven't Why are done you not going? anything. What's behind your mind? What's I going wasn't on? confident. When I started my first mural, I was like really scared. Okay, what अगर wall खराब हो जाएगा या बिगड़ जाएगा. Um, and now I'm pretty confident that I can actually go for it. So when you start trying out, then you build the confidence. अभी जब मैं मेरा mindset was completely different when I did the first wall art. I was so scared. Now I'm not that scared. I know I can do it. It's because मैंने 4 कंप्लीट किए हैं, तो वो माइंडसेट हो चुका है. नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन एक्चुअली टेक ऑर्डर्स. So when you take order, how do you plan for it? Okay, so I see the dimension, the color requirements, their interiors, what colors might suit their interiors, or their location, how far is the place located from my house. Traveling charges भी बहुत लगते हैं. And then उनको क्या what requirements they want. That's what I see first. तो आप आपका सोर्स ऑफ लर्निंग क्या है? जैसे अब अभी तो हम लोग के पास बहुत सारे सोर्सेज है, यूट्यूब पे, Hmm. टेक्स्ट पे। सो व्हाट डू यू प्रेफर एज योर सोर्स ऑफ लर्निंग? Source of learning, I never went to any workshops honestly. मैंने कभी when I started doing mandala मैंने कभी workshop ऐसे attend नहीं किया. मैं I started learning from different artists Instagram. I started having a consistent eye on their work, how they do, कैसे थे पहले, अब कैसे है, how are their artworks. ऐसे करते करते I started learning. And I don't really have a source of learning. Whatever I did is all self-taught.
I started experimenting and I started learning. So you learn from different artists on Instagram and YouTube only. Yeah. Not YouTube specifically, it's only on Instagram. Okay, so it was more kind of an inspiration. You see, you have Yes, not exactly. learned from any tutorial type things. You have only No, seen inspiration and it's all inspiration. Yeah. And now it feels so great to inspire other people because I used to take inspirations and then I have become an inspiration to people. so, what is the most common question you get in your DM or comment asking? I've seen many questions popping in the Mm. artist comment section. What is the most common question that My you get? art supplies. People are so curious about my mural art supplies. And then what am I studying? What do I do? I mean, they want to know what I do the whole day, my age. The most frequently asked is art supplies. And then how do you get so much time to invest in art? Also the most frequent question I get. Yes, once your audience started to like your work, then the next thing is that they want to know more and more about you because they can relate. जो Yeah, जो लोग exactly. आर्टिस्ट हैं वो लोग टाइम मैनेजमेंट करना पूछते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का आर्टिस्ट लोग को होता है, Mm. प्रोक्रेस्टिनेशन का होता है। और जो लोग Creative आर्टिस्ट blocks नहीं, also बीच हाँ, में होता है. और जो लोग आर्टिस्ट नहीं है, सिर्फ वो लोग आर्ट लवर हैं, आर्ट अच्छा लगता है, वो और जानना चाहते हैं। और आई थिंक जो आपके एज के व्यूअर्स होंगे वो देख के Mm-hmm. ये सब और भी ज्यादा इंस्पायर होते हैं क्योंकि हम इंडिया में हमेशा हम लोग देखते हैं जो आर्टिस्ट रहता है वो बहुत ही उसके मतलब ऐसे पोर्ट्रेट रहता है कि बहुत ही ज्यादा एज का है, मतलब बहुत ही ओल्ड दिखा रहा है ऐसा। एक झोला लेके जा रहा है वो, मतलब बहुत ही पुअर पोर्ट्रेट किया था और बहुत ही ज्यादा एज में पोर्ट्रेट किया जाता है। तो जब नए नए एज के लोग भी इतने निकल के आ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करता है कि हम भी कर सकते If you want to create an artwork, there's no age. Art एक artwork बनाने के लिए कोई age नहीं है. एक even a 80-year-old lady can do, and then even the same one, even a 8-year-old girl can do. It all depends upon your mindset and how dedicated you are towards to create an art. ऐसे कोई age नहीं है एक artwork बनाने के लिए. There's no age for learning. हैं। Yes, I also think that only because I have seen in this lockdown many younger people also They and started many older get people yeah. also they are into art that we generally not see. They are attending workshop or they have started drawing, so Mm. that's a very good thing about lockdown. Yeah. Everyone has everything has a positive and Invest negative, in the time or something. and we Yeah. have gained some positive. Actually our podcast behind the creators was also started in this lockdown. इसको Mm. 22 अगस्त को लगता है मुझे 1 साल हो जाएंगे, इसी दिन हम लोगों ने रिलीज किया था Okay. पहला एपिसोड। तो Okay. 2 week तब में it's gonna हाँ। be 1 year. So, what is your usual routine when you wake up, and how do you proceed towards your day? Okay, so I do artworks at the end of the day. ऐसे 7 के बाद or 6 के बाद. Normal, I have classes till 3, 9 to 3 class. Then I work out 4 to 6. 6 के बाद ही I get time to do whatever I love to do. Artworks and then murals. तो बहुत सारे आर्टिस्ट का ये रहता है जैसे कि वो सुबह सुबह उठ के बनाते हैं क्योंकि उनकी थ्योरी ये रहती है I'm night कि artist. they get exhausted from all the Hmm. talks and everything, day to day work. So you usually do your art at night time. At the end of the day, yeah. सो आपने जैसे बोला था कि आप बहुत ज्यादा आइडिएशन करते हो एक के, तो Mm. उसके तो वर्कशॉप्स में आप क्या बेसिक स्किल्स सिखाते हो कि आइडिएशन प्रोसेस के बारे में भी बताते हो? Ideation process तो वो एक के ऊपर ही डिपेंड करता है. You can never teach ideation process. It depends only on yourself. You can teach how to draw. Ideas तो खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है. It depends upon your creativity. Creativity कभी सिखाया नहीं जा सकता. I can Yes. teach someone to draw, but then I cannot teach someone how to think.
So in my workshops, I teach how to draw a mandala from basic grid patterns, designs. Um, Ideation is not something which can be taught. आई थिंक दिस wouldn't be possible if अगर लॉकडाउन नहीं होता तो, क्योंकि हम लोग Mm, इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं ट्रैवल में कि अपना mm, पैशन फॉलो करने का टाइम ही नहीं मिल पाता. mm, सो अभी बहुत सारे लोग अलग अलग चीज से क्रिएटिविटीज ला रहे हैं, और आर्ट ऐसा फील्ड है, आई थिंक इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है. डिफरेंट डिफरेंट मीडियम और mm, डिफरेंट डिफरेंट फ्यूजन आर्ट और ये सब फॉरेन में ये सारी बहुत सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं हो पाई हैं. सो इसका भी स्कोप बहुत है अभी. बहुत ज्यादा हाइप पे नहीं है ये, क्योंकि बाकी सारे जो आर्टिस्ट के मीडियम होते हैं जैसे सिंगिंग और ये सब इंटरटेनमेंट mm, पर्पज से रहते हैं, तो उसको वैसे ही कार्व करके दिखाया जाता है. लेकिन आर्ट, जो फाइन आर्ट्स है, वो ऐसे एंटरटेनमेंट mm, के लिए नहीं है. वो आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से तो वो दिखाया नहीं जा सकते, तो उतनी हाइप नहीं वो छुप बनी हुई गया है. है फील्ड. हाँ. इट्स हिडन. इट्स इंक्रीजिंग. बहुत टाइम लगेगा ग्रो होने के लिए. अभी जैसे एक्टिंग अभी इतना ग्रो हो चुका है. इट विल टेक टाइम. वो लेवल पे रीच होने के लिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट देन या इट इज ग्रोइंग. लॉकडाउन की वजह से बहुत ग्रो हो चुका है. हाँ. So, what you do in free time to relax? Read books or podcasts, and what you doing to relax your mind? I read books. I can suggest. I can suggest a creative block. Like it's a book how to release your when you don't find time for art. You can read that book. It's by Krevsa. Yeah, she's the author of the book. Okay. She's beautifully explained how to deal with art blocks. So, what do you like the most about that book? If you cannot do art, there are other things also you can pursue to give your get calmness in yourself. That's what the book is about. As a cooking, you can play outdoor games. You can listen to music during art block. तो आपके हिसाब से जैसे बहुत सारे मंडल आर्टिस्ट है या बहुत सारे वाटर कलर आर्टिस्ट हैं, तो व्हाट Mm. इज द थिंग दैट डिफरेंशिएट देम? मतलब एक आर्टिस्ट को क्या यूनिक बनाता है? अगर मीडियम सेम है, मेथड सेम है, तो एक आर्टिस्ट को यूनिक क्या बनाती, कौन सी चीज बनाती है? कोई यूनिक बनना चाहता है अपने फेलो आर्टिस्ट से, तो वो क्या चीज है जिससे वो यूनिक बनता है? Uh, okay, so unke every artist is unique in their own ways. If you try to copy an artwork, you can never copy an artwork. I say, artwork can never be copied. सबका अलग अलग आइडियाज होता है. अलग अलग they pour their own hard work in that, which can never be copied. You can differentiate them by the designs. ऐसे इतने सारे मंडला आर्टिस्ट हैं इंस्टाग्राम में. But then if you'll be notice that सबका अलग अलग पैटर्न्स होता है, डिजाइन्स होता है. So through that way you can differentiate every other artist. बहुत दिन से काम करते करते उनका एक खुद का एक स्टाइल डेवलप हो जाता है, मतलब कि Hmm. वो उनके रिकॉग्निजेबल है. उनके ऑडियंस या कोई जो देखता Hmm. है आर्टवर्क, वो पहचान सकता है कि ये स्पेसिफिक ये पर्सन इसका का आर्ट स्टाइल है. है. So, as you as you told about creative block about that book, so many Hmm. artists are current deals with in day to day basis they deal with procrastination. उनको लगता है कि मैंने ये आर्ट वर्क बनाया है तो ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और उसमें ही मतलब उनको वो फिर दूसरों के आर्ट वर्क से They कंपेयर get करते हैं. scared to post. Hmm. यस, दे गेट स्केयर्ड टू पोस्ट, और वैसे ही करके Right. फिर वो आर्ट वर्क कम बनाते हैं और ये सोचने में ज्यादा लग जाते हैं. तो आपके हिसाब से क्या तरीका हो सकता है वो डील करने का? Don't think twice before posting anything. बस पोस्ट कर दो. अब जितना सोचोगे उतना you stop yourself to post. If you have made something which is original, you feel, just post it. Or if you have recreated, please mention credits. That's हम्म. the humble request I can tell to every other person who's creating any other artwork. But then don't think twice before posting. बस post कर दो.
सो जो भी नए आर्टिस्ट हैं आपकी एज के या फिर जो नए आना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? अपना वर्क कैसे इम्प्रूव करें वो, और कंसिस्टेंट रहने के क्या क्या तरीके हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे रोके? तो क्या क्या आपके कुछ टिप्स क्या होंगे नए आर्टिस्ट के लिए? First thing, prioritize what you want. Um, it's all about prioritizing. That's what I feel. If you really want to pursue that, आप कैसे ना कैसे करके time निकाल सकते हो. And then second thing is trust yourself. Don't self compare. ऐसे खुद के work किसी और से compare मत करो. Because everyone are unique in their own ways. And never think twice before posting. Whatever you have made, just post it out there. And be very consistent. ऐसे you post for 2 weeks and then 2 weeks के लिए if you just get lost, Instagram भूल ही जाएगा कि आपका एक account है करके. It won't even recognize that you also have an account. Consistency is the key in Instagram. सो अभी जैसे जैसे इंडिया में धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है आर्ट सीन, तो आपको क्या लगता है अभी आने वाले में क्या सीन रहेगा? जैसे बाकी में बहुत सारे बहुत सारे अलग अलग फील्ड के आर्टिस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, ब्रांड को प्रमोट करते Mm, हैं। तो क्या लगता है कि आर्ट के फील्ड में अभी तो बहुत ही कम ब्रांड है या बहुत कम लोगों को इन्फ्लुएंसर mm, मार्केटिंग का मौका मिल रहा है, या कोई भी चीज प्रोडक्ट आर्ट से रिलेटेड, स्पेसिफिकली आर्ट से रिलेटेड, ऐसे तो कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन आर्ट से रिलेटेड mm. प्रमोट करने का क्या आगे क्या सीन होने वाला है ब्रांड से रिलेटेड और आर्टिस्ट को? According to me, जो ऐसे art showrooms हैं, who sells art supplies, they can collaborate with artists. वो तो definitely होने वाला है. Artists who have like 10K ऐसे followers, they can collab with the brands. So through that way, an artist can grow and recognize its name in the society. So as we are moving towards the end of this podcast, I would like to ask you कि आपके इंस्पिरेशन कौन है? आप किस आर्टिस्ट को देख के बहुत इंस्पायर करते हो? आपके बहुत अच्छे लगते हैं उनके आर्ट वर्क आपको? ऐसे कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट आप फॉलो Helen करते हो? Silva, yeah, Helen Silva. She's a mural mandala artist. She's amazing, amazing. She draws amazing murals. तो मैं जब भी उनका कुछ भी आर्ट वर्क देखती हूँ, I feel like okay, let me also try this. How can I convert this in my own creativity? She draws murals only. She draws only mural mandalas, and she's very, very inspiring. Mm. Okay. So uh, uh, thank you for coming to our podcast and Thank you for having me. sharing our Yeah. knowledge with our audience. Thank you so much. So हम पॉडकास्ट एंड के होने वाले, कुछ एक लास्ट थिंग जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहती हो या फिर उनको बोलना चाहती हो, तो यू कैन टेल देम। Follow your passion. Don't get scared before posting or doing anything. Just do it. Do what you love. So thank you for giving us your time. I enjoyed talking to you very much. So I मुझे ऐसा लगता है कि बाकी Welcome. लोगों ने भी enjoy किया ही होगा. So they can Mm, comment down and tell, और मैं आपके सारे links सोशल मीडिया के mm. डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं रिकमेंड करूंगा सबको ही, जो भी जो भी वॉल आर्ट करता है, जो भी मंडल आर्ट करता है, प्लीज विजिट हर अकाउंट एंड उनका वर्क देखिए, और प्लीज गो एंड विजिट, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू अवर Thank you. पॉडकास्ट।